बघितलं हे असे असं लोक मराठी बोलून हा सर सामने सामने अरे काष्टी है अरे अपने को पैसा लगा सर इकडे समोर बघा समोर सामने 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 सेंटर फिनाल करने बघा अरे ये भी है क्या अरे मैडम सर कुंजम कुंजम यहाँ देखो वेलकम टू मुंबई हे मुंबई महाराष्ट्र मुंबई हे सोन्या तू नको मध्ये मध्ये जाऊ रे ए मत करो ना ये सब साउथ में देखेंगे ना अपना वीडियो तो क्या इज्जत हो जाएगी अपने काय काय फालतू मराठी मैं Everyone look here, center look. गिरीश जी आइए गिरीश जी नहीं आ रहे यार क्या हो गया यार अभी भाई गिरीश जी नहीं आ रहे यार तो हटा गिरीश जी कहाँ हो चलो ओनली कास्ट चला उन्हीं कास्ट ओनली कास्ट मेन कास्ट ओनली स्टार कास्ट अरे हाँ वही सेट करा रहा हूँ रुक ना 2 मिनट Everyone look here, center look. क्या? सोलो सोलो थैंक यू हाँ 1 मिनट एक आपका आप दोनों का एक आप दोनों का एक आप दोनों का दोघांचा बरोबर कॉंग्रॅच्युलेशन सर इकडे समोर बघा ये तू नाचतो कसं रे अरे भाई सिंपल हो ना एक ही बार ले ले हाँ अरे क्या बात है यही चलेगा बात है वाओ थैंक यू सोलो एक मैम का सोलो नहीं सर दोनों का मैम थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं कम दो अरे मतलब फर्स्ट मैम का मैम लुक हियर सेंटर सेंटर मैम लुक हियर सेंटर सेंटर थैंक यू मैम आता पडली असती मॅडम फाइटर सेंटर लोग फाइटर सेंटर ये जा मध्ये जा थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर ये आला विराट सर टी शर्ट निकल गया विराट सर लुक हियर सेंटर सेंटर विराट समोर बघ समोर असं लागलं बघ बघ मराठी हा वेट 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 सेंटर लोग विराट लुक मस्त आहे एकदम काय समजा थैंक यू विराट ये थांब रे एक मिनिट रुको टी शर्ट तो भी साफ डन थैंक यू चलो आप लोग लॉन्च में बैठिए हम लोग प्रोड्यूसर है वो मॅडम सेंटरला आहे ना मॅडम सेंटरला या सेंटरला थोड्या या साईडला हा आता कसं अरे मेरा कॉपी हो गया थैंक यू साथ में एक सोलो वैकुंठ के द्वार है खुलते उत्तरायण काल में अष्टाक्षर मंत्र देवे
so much. In the meantime, वो अच्छा गाना लगा रखा था यार. नाम भी बड़ा और काम भी बड़ा. Virat Karna, ladies and gentlemen, give it up for him. There he is, lovely. ॐ मदव्याः समृताः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तदाग्रे तस्य दुष्टा विदधभूतमेति तन्मतस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महन्तमाद्रियवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वादिमृत्यो मेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हस्तस्य भुवनानि पृथिवा जो देवेभ्य एतद्ब्रुवन्ना जसवैवं ब्राह्मणो विद्यास्य देवा असन्वसे श्रीश्चरे लक्ष्मीश्च वदन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं महिषन्निखाणा ॐ महिखाणा सर्वलोकं महिखाणा ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु. धन्यवाद. हर हर महादेव. बहुत बहुत मच. मैं सच बता रहा हूँ, we've seen a lot of things. हमने बड़ी सारी चीजें यहाँ देखी हुई हैं हर ट्रेलर लॉन्च से पहले, लेकिन ये अब तक हमने महसूस नहीं किया था. ये देखा ही नहीं, हम सब ने महसूस किया. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्रोड्यूसर्स के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, एंड द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म फॉर डूइंग इट लाइक दिस, जो कि जैसा मैंने कहा हमने पहले कभी महसूस नहीं किया. यू नो, ऐसा लग रहा है पूरा प्योरिफिकेशन हो गया. क्यों ऋषभ भाई, है ना? है ना? इट वाज लाइक वी फेल्ट इट, राइट नबा? वी फेल्ट इट सर, ऑफ कोर्स. हाँ, of course we have to talk about that. लेकिन उस सबसे पहले, ladies and gentlemen, let me just do this formally on behalf of Nick Studios and Abhishek Pictures. I'd like to welcome each one of you. Thank you so much for being here for this grand trailer launch of जैसा सर ने मुझे बताया, नागबंधम. एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए. इस फिल्म को प्यार देने के लिए बड़े सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक चीज जिसकी मैं बात करूंगा वो ये है कि एडवेंचर और डिवोशन, उसका जो एक कमाल का मिक्स है ना, ये उन दोनों चीजों को जिस तरह से बहुत ही ग्रैंड और एडवेंचरस अवतार में बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया गया है, दैट इज समथिंग फिनोमिनल. और उसके लिए हमारे प्रोड्यूसर्स निशिता जी और किशोर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स आवर डायरेक्टर साहब अभिषेक सर, हु इज नॉट हियर, लेकिन जैसा मैंने कहा बड़ी सारी बेस्ट विशेस उन्होंने भेजी हुई हैं. यहाँ पे जी स्टूडियोज से, जो कि हमारे बड़े कमाल के इंसान है, डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यूज के हेड हैं, गिरीश सर आए हुए हैं. थैंक यू सो मच सर for being a part of this film. Of course, I'm going to acknowledge all you lovely people, but before that, it's time for the trailer. With your kind permission, ho jaye? Hai na? Let's do it. She said it. So, ladies and gentlemen, all eyes towards the big screen as we play the trailer of Nagabandham, The Secret Treasure, exclusively for all you lovely people. Ho jaye. Entire team, Brahma Kamal का मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आशीर्वाद है ना, वो आप लोगों के साथ जरूर है, because you guys are blessed to be a part of this spectacular piece of cinema. एक बार जोरदार तालियां सबके लिए.
And once again, I'd like to thank all you eminent journalists for being a part of this. Ravi sir, thank you so much. I know आप ही सबसे ज़्यादा जोश दिखा रहे हो वहाँ बैठ के. फिलहाल जोश की जहाँ तक बात है, I'd like to invite these two wonderful people on stage जिन्होंने इसको possible किया है. Ladies and gentlemen, the very gorgeous, of course, हमारी producer साहिबा निशिता नागरेड्डी के लिए एक बार जोरदार तालियां. Along with her partner in crime, of course, Kishore Annapur Reddy sir. Please मंच पर आइए, जोरदार तालियां. Of course, these are the wonderful people who've backed it and अपनी पूरी might के साथ. और ये कमाल का product नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैं बोलूंगा ये कमाल का experience हम सब के लिए लेकर आए. Thank you so much, ma'am, for being here. Thank you so much, sir, and congratulations to you. As I said, you all are blessed to be a part of this, and the audiences, I'm sure they're going to love the experience. What would you like to say to all the lovely people? क्या response मिला है? हर हर महादेव. ट्रेलर देखा है आपने, कैसा लगा? So a small disclaimer, my Hindi is broken. I have a lot of confusion between mera, meri and aapka, aapke. So it's not a disrespect, but it's out of confusion. So please don't judge me. And I would like to really thank media. आपके वजह से इतना ज़्यादा reach मिला है नागबंधम को. And this is a great opportunity for me to thank you all. With all your love and support, this has been possible. And first of all, talking about Nagabandham. Nagabandham is not just another film. It's a larger-than-life mythological universe specially crafted for the audience. And it's an attempt to preserve India's civilization legacy. ये हमारी तरफ से सनातन धर्म को एक समर्पण है. क्या बात है, क्या बात है. Beautiful. हमारे हिस्ट्री सबको पता है क्या हुआ है. मुगल इन्वेजन के बाद काफ़ी कुछ लूज किया है हमने. they've looted our treasure, they've looted our temples. करोड़ों लोग मारे गए हैं. And Nagabandham is an attempt to show to the future generations our ancestors' sacrifice and resilience they have shown towards protecting our dharma. Yeah, that's it from my side. आपने बोला हिंदी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा बोलोगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे. जोरदार तालियां हो जाएं. And it's not just me. किशोर सर वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं, हाय मेरी अर्धांगिनी इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, ये तो कमाल कर रही है. कमाल आप दोनों ने किया है. किशोर सर, talk to us about this. One last yes, thing please. I would like to say, this event gives me really a great vibe. Thank you so much, Sunny ji, Red Eye Studios. गणेश जी की मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ है ये इवेंट. सब आपके वजह से हुआ है. Thank you so much for enabling this. हाँ. Thank you, Sunny ji. क्या बात है. वामसी शेखर साहब भी यहाँ पर हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर for all the love and support, of course. Sir, thank you so much. All the media people, thank you Girish ji for being here. Thanks to all the artists and all the other guests. So I think you've seen the trailer. Okay, I'll speak in English because she has already spoken enough. She's Hindi. aced it. So I'll speak in English. Yeah. So I think all of you have seen the trailer. How did you like? I actually, I mean, the reception that you guys have given, I actually loved your reception of the trailer. So I'm feeling very satisfied, very happy. I sure think it will be a blockbuster. Going forward. So thank. So ट्रेलर में आपको अभिषेक नामा जी का विजन दिखा होगा. We really miss him not being here today. Yeah, thank you. Thank you. That's actually a fantastic comment. Thank you for that. Yeah, so I'd like to thank, like she said, Abhishek ji for mounting this magnum opus here and delivering to such scale and span. I'd like to thank the artists, our Virat, Nabha, and our Risha. Sorry, I am feeling a little bit nervous, but yeah. So Rishabh for actually being able to do this, positioning it at this scale and being able to give your best,
on all the shooting days. Thanks to all the crew. Our Sonder sir is here. He has actually been able to bring this up. You've seen the visuals, so it's all because of him. I think I'd like to thank our production designer, Mr. Ashok. So he has been able to do a fantastic job with all the sets and all the art and craft that you're seeing on the scenes. Yeah, finally Abhishek, he has, like I said, he has done a fantastic job being able to mount this. I think that is all. Thank you everybody for being here and giving us such a huge, positive response. Thank you so much, sir. Kishore sir, thank you so much. Of course, you did talk about the gentleman here. उनकी नजर से और उनके कैमरे से हमने वो ये पिक्चर की तरह प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लगता है पेंटिंग है. गिव इट अप फॉर आवर डीओपी लेडीज एंड जेंटलमैन, सौंदर्य राजन सर, प्लीज मंच पर आइए. सो वी वांट यू हियर. ऑफ कोर्स a big fan of your work and बिल्ला वो प्रभास सर वाली फिल्म ना, मतलब तालियां बनते हैं ब्रो. दिस इज जस्ट वन नेम, ओके. यहाँ एक से एक दिग्गज बैठे जिनका एक फिल्म का नाम मैं लूंगा और आप लोग ऐसे तालियां सीटियां बजाओगे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. ऑफ कोर्स ही इज लाइक, मैं ना कैमरे से बात करता हूं, मैं माइक पे नहीं बोलता कुछ. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विजुअल्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, आल्सो वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द सीईओ हियर. सीईओ साहब हमारे वासु जी, प्लीज मंच पर आइए. द मैन हुज पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ऑफ कोर्स, वेलकम सर. Thank you so much. And now it's time to invite on stage the lovely people. Of course, मैं sir को उससे पहले request करूँगा. Sir, would you like to say something? Of course. Good afternoon, everyone. First of all, thank you very much for media people and Mumbai people, North Indian people. Nowadays, there is no North India or South India. You said it. India. Yeah. Earlier, it's there Bollywood, Hollywood, like that, Tollywood. Now, आजकल कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही बात हो गया. इंडिया फिल्म, इंडियन फिल्म. We are proud. I am proudly say we are going to give you very big Indian film for the entire world. Definitely, we assure our Nagabandhu will do best of this year, one of the best film in this year. Thank you so much, everyone. 2 साल से सब जने बहुत मेहनत कराते हैं फिल्म आउटपुट के लिए. 1 year we spent on post production, 1 year on production. Now 6 months we are doing post production work. Pre production के लिए 1 साल मेहनत करा था अपन ने. Finally we are going to deliver very excellent output. So thank you so much. Definitely you love it. Everyone should appreciate our Nagabandhu, our Nick Studios, और प्रोड्यूसर जाने किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ. बोले तो थोड़ा क्या बोल सकती, 100 crore spent on this film. Whoa. I think this is the first film एक न्यू स्टार में इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड करा. ऑल इंडिया में फर्स्ट फिल्म है ये. और अभिषेक नामा का विजन था ये पूरा. सब जाने अपना डीओपी सर सौंदर सर और आर्ट डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर और आर्टिस्ट हीरो विराट जी और अपना नवाज जी, स्पेशली और ऋषभ. बहुत क्या बोलूँ, हार्ड वर्क आता है ये फिल्म के लिए. ये आउटपुट सबका एंटायर टीम का हार्ड वर्क के लिए ऐसे आउटपुट मिला था आज. डेफिनेटली विल सरप्राइज यू ऑन July 3rd. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, एक चीज जिसकी बात करना यहाँ बनता है, इससे पहले कि मैं स्टारकास्ट को बुलाऊं, पद्मनाभ स्वामी, अनंत पद्मनाभ स्वामी जो हैं, उनकी एक यात्रा चल रही है इसके साथ साथ. पूरे देश भर में जिस तरह से जो माहौल इन लोगों ने कर दिया, जो मैं प्योरिफिकेशन की बात कर रहा था, आई थिंक इस इनिशिएटिव के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. ओके, नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द स्टारकास्ट. वील स्टार्ट विद दिस मैन. जी, अभी APTS में हो रहा है. हाँ. जल्द से जल्दी नॉर्थ में भी शुरू करेंगे. हाँ. तो प्लीज वेट फॉर पद्मनाभ स्वामी टू कम हियर एंड ब्लेस यू ऑल. Bless us all, of course. I'm sure ऐसा ही होगा. बहुत सारी blessings मिलेंगी. फिल्म भी देखी और blessings भी मिल रही है. और क्या चाहिए लाइफ में, है कि नहीं? अपना रथ यात्रा का एंटायर डिसीजन, विजन, आइडियोलॉजी, एवरीथिंग अपना मैडम जी का आइडिया था पूरा. Right.
Thank you so much, ma'am, for of course, making us feel it and experience it. It's time to invite on stage the Starcast. We'll start with this man, जिन्होंने हिंदी फिल्म में कदम रखा और the ball was out of the park. इनको बड़ा सारा प्यार मिला. The man, he knows what he's doing on that big पर्दा, अब तेलुगु डेब्यू कर रहे हैं इस पैन इंडिया फिल्म के साथ. मैं कहूंगा ऋषभ साहनी, ladies and gentlemen, give it up for him. हैंडसमता की मिसाल देखिए आप यहाँ पे. ये अलग ऋषभ, अलग प्यार कर लो, आप ही कर लो यार. Thank you so much, guys. Thank you. अरे क्या करके मानोगे ऋषभ, दिस इज फैंटाबुलस. एंड जो बड़े पर्दे पे देखा वो तो और भी माइंड ब्लोइंग है. वी हैव टू टॉक अबाउट दैट स्केल. हमने शुरू में बात की थी कि वी ऑल आर ब्लेस्ड. टॉक टू अस अबाउट इट, बिकॉज एंटागनिस्ट टाइप कुछ दिख रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्या माहौल था? Bro, honestly, Abhishek sir is not here today, but it was entirely his vision. This character is very dark, and I'm doing a double role, and both my characters are dark. You can call it dark and darker. And Abhishek sir gave me the freedom to go to the darkest ends. He was so descriptive and vivid, and he explained the character very well. And the way he designed the looks, the way he designed the shots and everything, it gave me a lot of freedom to play the character, because it's not easy to play such a bad guy. And I really have to talk about two things, bro. Ashok sir, who's the art director of the film. He made such beautiful sets. I mean, there was a set where there were the 10 avatars of Vishnuji, and every time we were shooting, the first thing I would do when I went to the set was go in the middle, stand there, pray for 2 minutes. That used to give me so much, it used to make me feel so centered. That is one. And the other person I want to talk about is the editor of our film, Pranav. He has done a fantastic job with the edit. And Sondar sir, I mean, the way he was framing each and every shot, you just look into the camera and you could know that something crazy is going to come out of it. Special mention for our producers, bro. The way they have supported the film, I mean, they used to be there on set for all the night shoots, for all the day shoots. Be it they are feeling unwell, they are feeling well, they were there. And even Ira is also there on set for a long time, bro. And overall, I'm just thankful. I'm grateful for the opportunity, getting a Telugu debut with this film. I mean, I think God is really kind with me, because I got my debut with Fighter and then my Telugu debut with Nagabandham. And I'm just grateful. Thank you, Vasu sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Swandar sir. And thank you, Abhishek sir, for the opportunity. Thank you so much. यार, डार्क किरदार प्ले करने पे इतना प्यार मिलता है तो सब वही करना चाहेंगे भाई. बैडमैन को मिल रहा है सबसे ज्यादा प्यार यहाँ पे. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, now it's time to invite on stage someone who's supremely talented and gorgeous. हाँ जी, आओ आप आ जाओ, कम आ जाओ, आप आ जाओ. ये नहीं करने देने वाले मेरे को. Okay, so अब जिनका Rishabh for sure is extremely talented, but the most gorgeous is our heroine Nabha Natesh. Absolutely, she said it. अभी वही चलने वाला है यहाँ पे. She's conquered all the industries. कई सारी फिल्में, मैं किसी एक फिल्म का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, because every single time you've seen her, you're like, wow, she's just gorgeous and so talented. Nabha Natesh, give it up for her, ladies and gentlemen. Please मंच पर आइए. There she comes. अच्छा, यहाँ सीटियां हैं. वाह, वेरी गुड. बढ़िया खेल रहे हो तुम लोग. हाँ, Nabha, welcome. Thank you so much for being a part of this. It's so good to see you again. कुछ दिन पहले she was here, तो हमने वो माहौल देखा था. Everybody was a fan. We all were so much, in love with her. अभी वापस से thank you so much for being a part of this. Please मुझे बताइए आपके Thank you so much. आपके लिए how was the process, the entire thing, because this is huge. Hi Mumbai, कैसे हो? ट्रेलर अच्छा लगा? इतना सारा प्यार. Thank you so much. I mean, the kind of
energy you guys have given us for the trailer is amazing, and it's filled us with confidence. We were all sitting and the kind of, hooting and whistles. Thank you, thank you, thank you so much. What do I say? What do you want me to say? This movie has been, the journey has been beautiful. Nagabandham is not just any film, it's our Sanatana Dharma and historical events wrapped in like a beautiful drama and presented at a large scale visual spectacle. आपने trailer तो देखा होगा, but asli picture on July 3rd. Please, please do come to the theaters and give us the same energy. What more can I say? And I have thanked all of our team yesterday in very length, but I just really want to thank Soundit sir, Rishabh, our producers, our incredibly talented director, our hero Virat. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity, Nishita and Kishore. I want to see the movie as much as the audience have been waiting, because you're all in for a surprise, including myself. She said it. She said it. Yeah. Thank you so much for sharing that. Thank you so much. Okay, now, ladies and gentlemen, विष्णु भगवान की जो fabulous, आप लोग याद रखोगे. Give it up for हमारे hero Virat Karna, ladies and gentlemen. There he comes. Go Virat. कार्तिक पौर्णमी के दिन हमारा टीजर लॉन्च हुआ था. तब से एपीटीएस में सब लोग इनको शिवजी मान रहे हैं. जैसा मैंने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ यहाँ पे है. एंड आपका वो जो अवतार देखने को मिला, पहले कुछ दिख रहा है एंड देन सडनली वो ट्रांसफॉर्मेशन. टॉक टू अस अबाउट दैट. एंड आमची मुंबई मध्ये आपका स्वागत है, ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. हेलो मुंबई. मैं पहले बार इधर आ गया एंड मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर होता है. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. So I would like to thank my director Abhishek Nama for giving me this beautiful opportunity. क्योंकि second movie को इतना बड़ा movie आने के लिए it's not easy, and he had seen something in me, so I would like to thank him and my producers Nishita Garu and Kishore Garu for trusting me and giving me this huge project. And Nabha Natesh, thank you so much for supporting me, and she is very active in the shoot also. She used to give lot of energy. And Rishabh, thank you so much. And DOP sir, thank you so much sir. Your visuals are like crazy. And I would like to say only one thing about this movie. It's not a movie. I'm not inviting you to watch it just as a movie. I'm inviting you to experience the journey that celebrates our Indian culture and courage. Wow. क्योंकि हमारा मिट्टी का स्टोरी है ये, एंड वी डोंट नो आवर क्या बोलते हैं आवर नेक्स्ट जनरेशंस को. वी हैव टू शो आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर. सो दिस मूवी इज़ गोना शो एवरीथिंग. हमारा इंडियन का पावर क्या है और हमारा सनातन धर्मम का क्या है, एंड एवरीथिंग इट विल शो. एंड द स्टोरी रन्स अबाउट विष्णु, शिवा एंड नागसाधु. सो यू लिंक इट इन द लिंक पूरा आपको मूवी देखने के बाद मिलता है. तो थैंक यू सो मच. CEO वासु गारू, थैंक यू सो मच सर. एंड गणेश आचार्य मास्टर, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच बिकॉज फॉर द सेकेंड मूवी इतना बड़ा कोरियोग्राफर से डांस कोरियोग्राफी करना, इट्स नॉट ईजी. एंड आई वुड लाइक टू थैंक गणेश सर. एंड thank you sir. Thank you so much. Thank you. Oh. And we started Ananta Padmanabha Swami Radha Yatra in AP and Telangana. वो उसको बहुत अच्छा response आ रहा है, and we'll start this in Mumbai and North India also. I think that North, South, East, West पूरा सब हमारा मिट्टी है, एंड उसमें हमारा माइथोलॉजी एंड हमारा स्टोरी पूरा सबका एक ही रहता है. तो ये मूवी भी ऐसा है. सो सब लोग ये मूवी देख के जुलाई 3 एक सरप्राइज फील होता है. एंड
This movie is gonna surprise you all. Thank you so much. Thank you. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, लेकिन उससे पहले विराट भाई, यू टॉक्ड अबाउट एवरीवन, बट यू हैव टू टॉक टू अस अबाउट दिस कैरेक्टर ऑफ योर्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या किया है कैरेक्टर ने, क्यों अलग है ये वो, ये नहीं पूछ रहा हूँ. मुझे बताइए खुद को कितना चैलेंजिंग महसूस हुआ ये प्ले करते हुए, बिकॉज दिस इज नॉट इजी. Yeah, this is not easy because I mean, as a newcomer for me, playing this much variation from my first movie to second movie and playing Nagasadhu character, it's not easy. And I think that हमारा पूरा unit का पीछे ये power है. That power is supporting us. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां. We have some very important people. I'll be inviting them on stage. लेकिन उससे पहले we'll take your questions. और उससे भी पहले मेरे पास एक सरप्राइज है आप सबके लिए. मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सर आप आइए, विराट भाई यहाँ, नभा जी आपका मैं माइक ले लेता हूँ और आपको आगे आने को बोलूंगा. या बिकॉज वो एक हुक स्टेप है, वो तो करके बताना पड़ेगा. जो नमोरे सॉन्ग है ना, दैट इज समथिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ, वो तो हम चाहते हैं प्लीज थोड़ा सा हम सब के लिए बनता है ना. कैन वी मेक सम नॉइज फॉर, या ऑफ कोर्स. Give it up for Nabha, ladies and gentlemen. How fabulous that was. Thank you so much. Supporting our movie. Thank you so much. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां, of course, for the gorgeous lady and this entire team. Thank you so much for being so kind, of course. Okay, we'll do a quick picture with this team, है ना? And then we'll take the questions. And फिर कुछ और लोग हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा in some time, yeah? Can we all come a little closer? Got it? Thank you so much. Thank you so much. Okay, so now I know we are in love with that song. I know. So यहाँ पे where are we getting the first question from? Sir, please. सबसे पहला सवाल तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर मैडम से ही पूछना बनता है. मैडम, अभी मेरी एक कलीग ने भी एक एग्जाम्पल दिया है. बाहुबली जो फिल्म है हमारी कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा की एक वन ऑफ द लैंडमार्क मूवी बन चुकी है. साउथ की जब भी फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले डर जा रहे हैं, ये कह सकता हूं मैं. ये जो आपकी फिल्म है, इसकी जो जर्नी की शुरुआत हुई किस तरह से हुई? क्या आपने पहले से ये तय करके रखा था कि बाहुबली से भी हमें बड़ी फिल्म बनानी है? We are not from the film industry. This is our first film, Nick Studios का. पहले हम सॉफ्टवेयर बिजनेस कर रहे थे. उसके बाद बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते थे और ये फिल्म की अपॉर्चुनिटी मिली हमको. एंड जब अभिषेक नामा सर से मिले थे, उनका प्री प्रोडक्शन वर्क इतना स्ट्रांग था, उनका विजन पूरा समझ में आ गया हमको. तो उसके हिसाब से हमको लगा ये फिल्म बहुत बड़ा हिट बन जाएगा. एंड आई एम ऑल्सो ए बिग डिवोटी ऑफ शिव जी, सो आई लाइक द सब्जेक्ट एंड वी वांटेड टू डू इट. More, Kishore, you want to expand more on this? Yeah, so again, I'll talk in English. Yeah, so when we started, I think the budget was not this high. I mean, so we started it, the output started coming well. We started seeing very good reception from the, people who have seen the rush, people who have visited the sets. The artists were also doing very well. Everybody was giving in their, day in, day out only for the movie. So if you talk about Abhishek, Virat, so most of the, I mean, the good amount of team is also a first timers and they're giving their heart and soul for the project. So seeing that dedication, I think you get that kind of confidence that this project will be a huge success. So that is the gut feel that we have gotten when we started early. And as we started seeing the output, as we started getting more and more confidence, we started investing. And while we are doing that investment, we are also cognizant of what is the risk that we're taking, how to de-risk it, and will it be a profitable venture or not. So all these have been considered and then only we have invested. So you can call it a calculated risk.
आपने कैलकुलेटेड रिस्क की बात की है, इन्वेस्टमेंट की बात की है। अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या इन्वेस्टमेंट किया है इस फिल्म के लेकर और क्या प्लानिंग है रिटर्न्स को लेकर? कहाँ वर्ल्ड वाइड किस तरह से प्लानिंग है? क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको लगता है कि ये फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड सारे तोड़ पाएगी? क्योंकि विजुअली तो बहुत इफेक्टिव लग रही है फिल्म। So the investment is at around 110 crores plus has been the investment. As far as will it cross Bahubali or not, I think you guys, your response has actually been the proof of whether it will cross Bahubali or not. So I'll leave it at that. So let's wait for July 3rd and then see how it goes. So my friends keep telling me, पूरा Instagram पूरा नागाबंदम ही चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? So that itself is that shows the movie is going to be a big blockbuster. I think we've somewhere created that interest in the audience, that this is a film to look out for. The film has stands out, and then there is great content that that will surprise you. So I think those three things are actually enough to pull the audience into the theaters. And then let's see how it goes. And talking about the business, we've partnered with some of the greatest. Like we have Z Studios on board for distributing in North and overseas. I think that gives us a strong strength. I think we have closed 80% of the business, so I think we're out of risk in that sense. Sir, my question is to Virat sir. Yeah. Hi, sir. First of all, congratulations to you. All the best for this film. Thank you so much, sir. You got a very good opportunity to act in this big film. It will be a pan-India film. So what is your feeling with this particular? You joined with this film. Actually, you can say it's a debut to this thing. So what is your feelings? Just express your feelings. मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी. सो ये मूवी के लिए पूरा मैं मेरा जान लगा के काम किया, क्योंकि आपका दिल में छोटी से जगह चाहिए. सो या एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट. सर आपने नहीं सुन रहे तो सॉरी. या Hello. My next. Sorry, sir, Can sorry. I, sir? Sir, आपका mic. Sir, मैं पूछ लूँ? वेलकम सर के पास आ जाऊंगा. अंजलि का मैम वेलकम. Yeah, Kishore and Nishita, congratulations. Hugely mounted, absolutely. And then when you see this trailer itself, I just don't know what's lying ahead in the film as such. And it's wonderfully executed also. And Soundarajan, my goodness, it's mind-blowing, absolutely. And the best part is that everyone, right from Nabha, Rishabh, my goodness, you're looking mind-blowing, absolutely. And two avataras you are doing, two double role, that also you are looking different and at the same time menacing, so dangerously menacing. And Virat, my goodness, the character you have portrayed, it's out of the box as such. I just want to ask one thing, Rishabh especially, that this film is getting released in Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi. And have you done dubbing for Telugu also, if I'm not mistaken? Telugu and Hindi. And how did you find the experience working with these people from the south as such? Sir, honestly, I think I've been blessed. My first film, I had a great experience with the production team. This, during Nagabandham, I have nothing to complain about. Like I said before as well, the producers backed everyone through and through. They were there to take care of everyone. They were there to look out for everyone. And there was not much of a difference in the working styles also, because at the end of the day, both were like big commercial films, and both of them were dealt with the utmost professionalism and grace, I would say. And Kishore, one thing I want to ask you, this is your first film, such major. Are you planning for other productions also, or after seeing the response to this film, you'll start planning? How was the experience of yours working with these people as such? I think this is my first time. I mean, obviously all of you know. So I think one of the mentions I want to do is of Vasugaru. He has been the pillar of support for us. I mean, we don't know anything in production in that sense. So he has guided, helped,
told us how things work, how things do not work, where to be careful, where not to be. I think, and he has been with Abhishek for long, and they have done enough number of productions to be able to know what is right, what is wrong. So I think in that way we've been. I mean, the experience has been good. There was too much to learn in too short a time, and there was we have spent also too much in too short a time. So both ways. So, but I think it's a good investment. I think you have gotten the right kind of output. Yeah. So that is And what it is. Abhishek is not there. We are missing him as such. Yeah, yeah. And he has done wonderful job. Everything is the story, screenplay, direction, everything. Wonderful. Beautifully executed. Wish you all the best. Thank all you. The best. My question is to Rishabh sir. Rishabh sir, big fan. As he was saying already, since it is very difficult to work on a Telugu film, since you are a Hindi person and you know Hindi language mainly, so is there any dialogue which you can say in front of us for us, like anything, like in Telugu? Sorry. So this was one of the dialogues from the film. It's one of my favorite scenes from the film. Yeah. It goes like, మీ డాడీ నేను కలిసి గేమ్ ఆడితాం, నేను గెలిచే వాళ్ళకి ఇవ్వలికడా. Sir, meaning, sir. Me and your dad are playing a game and I'm winning. Now whoever's the winner, he needs to get the prize, right? But your dad's not giving me the prize. That was the meaning of the dialogue. Lovely. Thank you, sir. हेलो, हाय अंजुलिका हियर फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स. एंड क्या मैं कलयुग के सबसे बड़े राक्षस से सवाल पूछ सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, Rishabh. We have seen you in Fighter. You have been that gelled hair, soft kind of a villain in that. And now I see you in such a getup, like with makeup and hair. The externalization of the character is really, really very impressive. What was the internalization of the character? How did you prepare it internally for the character? I use my own, I follow one process. I write down the complete backstory, get into the character. Like, I write down incidents about the character's life in his younger days, create a whole story. In this, I had 2 characters to play, so I had to do it twice. But yeah, most of it was internal. Most of the internalization happened by writing about the character, exploring the characters through history, through books and all, whatever material I could find about the character. So that is how I internalized it. Hello. Thank you so much. Hello. Check. Hello. That second character के लिए ऋषभ को daily 2 घंटा टाइम लगेगा मेकअप के लिए. Sir, 3 hours. Sometimes 3 hours. Vasugaru, it's I think 6 hours. Both of these guys have lot of patience sitting 6 hours for the makeup, hero and our villain. Yeah, no, it was. The thing is, director sir envisioned the character in such a brilliant way that it didn't feel like too much of a task because the output was coming out to be so good. Hi. Yo. Hello. Our question is for the ma'am. We loved you seeing the performance doing hook step over your life. So we also want to do it with you. Can we? Yeah, please. Right now? Yeah, right now. Okay. Okay. Okay, so we'll Shall do we it. come? I'll call you. We'll just quickly finish the questions. Sure, I'll come to you. Yeah. Sure. Thank you so much. Here, Vishal here. Hi. My question is for you. It was hardly we can see you in the trailer, 2 frames, and there is also recently there was very big film and which was only focused on the hero, not on the heroine side, and this is the complaint from the audience point of view for you also. I just want to know about your character and also question for you guys also. Can we see only Virat as the main focus, or we can see the heroine part also in the film? The story of the film is such that every character is justified. There's really no compromise on anybody. It's like heroine को ज़्यादा screen space नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है. We made sure everybody is getting there. I mean, this is not a typical hero-based movie in that sense. You will see the story running, story leading it, and then everybody giving in their everything for the Because story. it's a huge complaint for the viewers also. Nowadays, more focus are there on the hero,
not on the heroine. I think the trend is changing. No, as because the stories are Because taking up recently, as a viewer, also, if we talk, we have seen this complaint. Big budget film came and which was Definitely, focused. I can understand your And this complaint. trailer also, we can The- hardly see her. Only 2 frames I just saw. No, no. The director has chosen to do an action cut, so my character has not been. I have not done any action, so I'm not. In That's the why I'm frame, asking you. but Tell me something more about but your character. What my I can character see. is called Parvati. Yeah. It's got very much to offer to the story throughout the film. It's got many, many layers. You're going to be surprised when you watch the film. And I've gotten a very beautiful, a great opportunity to portray this character in a sense as to a woman's every single role in her life, be it a daughter, be it a sister, be it a comrade, be it a companion, be it a lover, not just for a for like a title, but also contributing to the story in these roles. So it's not going to be how you've been asking. It's going to be amazing because, like our producer mentioned, this movie story is the main focus, and a lot of other characters also actually come and going to entertain you in many, many ways. And also Virat, yeah. Yes. Tell me. Sir actually has to say something Yes, about yes, it. sir. Her character is a surprise in the film. There's a surprise in Okay. the film, so we have hid it from the trailer. Okay, okay. So Sir, that's why Dava she's is not more shown than much. just a Be surprised in the theater. I hope. Yes. heroine is more than just a glamour in this film. She has a lot to deliver, which you will be seeing on the big screens on July 3rd. And also, Virat, it's a fresh start. Tell me something, how difficult mythology is for you. What was your research when you got this character? सो पहले मेरे को भगवान का आई मीन आई यूज टू प्रे गॉड बट इतना ज़्यादा आई मीन नॉट सो मच क्लोज टू द गॉड सो जब ये स्टोरी सुना था तो I started, surveying about the character and the Naga sadhus and all. So like that, I became very close to Lord Shiva, and I used to go to temples and all. While playing the character, also I went to the temple daily, and I used to do abhishekam for Lord Shiva. So like that, I got lot of emotionally connected to Lord Shiva. And I feel like while playing the character, some energy is behind me, so that in the tough situations also I played this with lot of encouragement and courage. Yeah. To add to what Virat said, he has a great body in the trailer, as you can see. But of late, he's been going to a lot of temples. He's become a big devotee of Lord Shiva, 41 days vrat and all that. He's not been eating well, I think, which made him lose lot of weight. एंड ऑल्सो ऋषभ, आपसे मेरा सवाल है, ये आपकी दूसरी फिल्म है. पहली फिल्म को काफ़ी प्यार मिला है, लोगों ने काफ़ी सराहा है उस कैरेक्टर को. एंड सेकेंड फिल्म की अगर आप बात करें, डबल रोल है आपका. किस तरह से आप देखते हो, क्योंकि अक्सर लोग हीरो के किरदार को काफ़ी प्यार देते हैं, विलन के किरदार को प्यार देते हैं, तो कहते हैं कि ये बड़ी फिल्म है क्योंकि विलन के किरदार को प्यार मिला है. आपकी पहली फिल्म में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है. ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है. आप अपने किरदार के बारे में बताइए थोड़ा सा. एंड कितना डिफिकल्ट हो जाता है डबल किरदार फॉलो करना? यार मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है. Honestly speaking, difficult से ज़्यादा मैं बोलूँगा, it was more of an adventure for me because I was very, मैं बहुत खुश था जब ये कैरेक्टर, मेरे को 2 कैरेक्टर मिले इस फिल्म में करने के लिए, क्योंकि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. टॉकिंग अबाउट जो लव, जो प्यार मुझे मिलेगा, फाइटर के बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि भाई वी हेटेड यू ऑन स्क्रीन. मन कर रहा था आके तेरे को मार दें, मन कर रहा था कि ये मर क्यों नहीं रहा है कैरेक्टर, ये बंदा बार बार जिंदा हो जा रहा है. अगर आप लोगों को फाइटर देख के मेरे से नफरत हुई थी, मेरे कैरेक्टर से आप लोगों को डर लगा था, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ इस फिल्म में इट विल बी हायर. इस फिल्म में ऋषभ को घर पे लेने आ जाएंगे. आई होप ऐसा ना हो. बट इस फिल्म में बहुत ग्रूसम कैरेक्टर्स हैं मेरे दोनों. इट्स नॉट लाइक कि एक कैरेक्टर थोड़ा चिल है, दूसरा कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा ही हैवानियत वाला है. दोनों ही हैवान है, एंड एक से बढ़कर एक.
तो 3rd जुलाई को आपको पता लगेगा and I hope you guys hate my character again. All the best. We hate you, Rishabh. Okay. One last question we're taking. Character, Yeah. not everyone Of course, says, of course. I hope you love my character, but this is something new. I hope everyone hates my character. Love this. As a villain, that's the goal, ma'am. Off screen, on screen, of course. Ji, आइए. Sir, my question here, sir, to Soundar, sir, this larger than life film deserves to be come in 3D also. Is this coming in 3D version? Yeah, It has to be deserved. We made the trailer in 3D, but not the trailer, the teaser. But then this, I think, if we get more time, we'll try for it. But It has to be deserved because all the whatever the visuals we see. So the teaser, I've seen the teaser in 3D. I think it was fantastic. We did a show in Hyderabad. The details that have come out, I mean, the cinematography and the direction, the artwork is vivid, more and more vivid. You will see all the finer details when you get it in 3D. But then I think the time is not sufficient for us to be able to do 3D right now. I give think the deliverables is difficult. Yeah. Within yeah. that, So after the main run, I think we'll see. We'll try another release in 3D if everything goes well. Let's see. Yeah, to the producer and Vasu sir, one small question. We are not sure what happened before Pedi release of Ram Charans. There were a little bit deadlock between exhibitors and distributors happening in Telugu states relating to new revenue sharing model or something rental kind. So there was, I mean, intervention by Chiranjeevi sir, and it went. From July, there was some new model coming effective in Telugu states. There was, I think this will be your first film. What can you share that? What will be the new model kind? Can be. Yeah, thank you. Yeah, it's there. Rental system, percentage system. Actually, all over India, only percentage system is there. But in Telugu states, there is a rental system as well as a percentage system. Both the systems is running there. For big films, rental is more beneficial, and for smaller films, mid-level films, percentage is always a good thing. अभी क्या हो रहा है, वो एग्जीबिटर्स बड़ा पिक्चर्स साल में 1-2 पिक्चर्स आ रहा है, उसको रेंट पे लगा के पूरा शेयर लेके जा रहा बोल के फाइट कर रहा, अभी कलेक्शंस नहीं बराबर नहीं आ रहा छोटा फिल्म्स को, इसलिए वो लफड़ा था. अभी फाइनलाइज हो गया from 3rd July with, I think, with our film, entire Telugu states would be percentage system only. Exhibitors को benefit हो जाएगा वैसे. In the long run में वो compensate हो जाएगा. 3rd July ना सर, सबको देखने को मिलेगी ये पिक्चर. पूरा पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, वी गोइंग टू एंजॉय दिस. बस आप उसका स्ट्रेस मत लो, थिएटर देखो आप बस. अभी फिलहाल के लिए, बिफोर वी रैप दिस अप, लेडीज एंड जेंटलमैन, द टू गॉर्जियस लेडीज, ऑफ कोर्स यूड लाइक टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम अपने अंदाज में. मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा यहीं रहिएगा. एंड वहीं से कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज? या also here. This is fabulous. Yeah, thank you so much. बता दो अपना नाम जल्दी से. Moksha. मोक्षा. Anushka. आप लोगों के चक्कर में लोगों को यहाँ मोक्ष मिल गया. कैसे, कब, कितना टाइम लगा सीखने में? Yeah, I mean, it's just so graceful, and I mean, you're doing it so beautifully. I mean, we love dance, and that's how we just wanted to do it. You know, we are so grateful. Thank you. आप दोनों मुंबई आ सकती हैं. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. Of course. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Now I'd like to invite on stage. Of course, I'd request you to kindly, take your place on that stage. I'd like to invite on stage two very important people, ladies and gentlemen, Dileep Soni Saab and Sanjay Singh ji, who are this very important part of business syndication for this movie. तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां. Thank you so much for being here, being a part of this team. Please आइए sir. Thank you so much. Of course, पूरे जोश और ज़ील के साथ, of course, you are here to thank you. Support the film. So, would you like to say something? Of course. Yes, thank you very much. हिंदुस्तान के सभी स्टेट से और हर एक लैंग्वेज के मीडिया से आए हुए सारे दोस्तों का स्वागत है यहाँ पे. और ये जो फिल्म है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ, हमारे इस जहाज के कप्तान, ये जंबो जेट है. ये जो जहाज है ना नागाबंधम, ये जंबो जेट है. दिस इज कॉल्ड द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, एयरबस 380. ये जो जहाज है नागाबंधम इज नोन एज ए एयरबस 380.
तो इसके जो कप्तान हैं हमारे डायरेक्टर साहब अभिषेक नामा जी, उनको हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमारी पिक्चर 3 जुलाई को वर्ल्ड वाइड रिलीज है, इस पैन वर्ल्ड फिल्म, तो उस फिल्म का कुछ हमारा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो इसके लिए नहीं आ पाए. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस एंड अभिषेक गारू, मिस यू हियर. एंड इस फिल्म के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, to bankroll this film and believing this content, I would like to salute the producer, the dear producer, husband and wife, Kishore Garu and Nishita Garu, capturing this spectacular visuals. Roman Nandi sir, Talivare, Inge Talivare Inge, Sundarajan Garu, the cameraman, the DOP of this film. एंड एक बात अभी बताना चाहूंगा कि अभी ऋषभ ने बोला कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग मुझसे क्या बोलेंगे, हेट नहीं करेंगे. आप लोग गलत समझ रहे हैं, इनको एक्चुअली बोल नहीं पा रहे हैं, इनको शर्म आ रही है बोलने के लिए. जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान, आप लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद ऋषभ से नहीं, जो विलेन है ना दुनिया में सबसे खराब से खराब, गलत से गलत विलेन को देखा होगा, इस फिल्म को देखने के बाद में विलेन शब्द से ऋषभ साहनी से घृणा हो जाएगा. सर फिलहाल आपके जोश से प्रेम हो गया हमें. इस टीम के लिए जोरदार तालियां. We'll do a quick picture with this. And I would like to thank the best and a fantastic performer, Virat Karna. You have done a mind-blowing job as a first film. You have done a fantastic job, Nava. Outstanding, mind-blowing. And above all, the man behind the show is Vasu Garu. Fantastic, sir. Without you, Nagaman was not possible. Thank you very much, sir. And Sudhakar Garu, Sensor Sudhakar Garu ekada. Sir, thank you, sir. Thank you very much. I would like to thank everybody. And मैं ये चाहूँगा कि सर ये फिल्म जो है ना, एक हैदराबाद से हमारे गांव में, हमारे शहर में लोग आए हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि सर इस फिल्म के लिए जितना भी आप लोग पॉजिटिव और जितना भी आप लोगों ने जो रियल में देखा है, उसको एक्सपीरियंस करके आप लिखिए. जो सच है वो लिखना है. मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ. जो आपने एक्सपीरियंस किया इस स्क्रीन के ऊपर में, जो ट्रेलर देखा आपने, उसके बारे में आप लोग अपने तरफ से जितना लिख सकते हैं लिखेंगे. तो हमारे लिए जो 2 नए कलाकार हैं, एक ऋषभ जो सेकंड फिल्म है इनकी और विराट की पहली फिल्म है, उनको बहुत फायदा मिलेगा नॉर्थ इंडिया में. तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है. तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं इस फिल्म के लिए प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, जितना भी कर सकते करेंगे. सैल्यूट टू ऑल द मीडिया, ऑल द जर्नलिस्ट, माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे एंड फ्रॉम अराउंड द कंप्लीट इंडिया. And my name is Sanjay Singh. I'm a small person. My partner Dilip Soni. We have done the business for this film Nagabandham in North India as well as in overseas as well as in satellite. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 110 करोड़ की पिक्चर के ये स्मॉल इंसान कह रहे हैं खुद को. जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए. That's all we have for you, ladies and gentlemen. We'll do a quick picture and then we'll call it a wrap. Very important person for this event, my dear friend, the person who has created this craft in Mumbai, in our land, Sunny Baxi, and team, and entire team, and also the man behind Nagabandham, the media head, the planning commission chairman for the publicity, for the PR work, Mr. Vamsi Sekhar. Ekada Vamsi Garu. Please, सबको दिखाइए ना एक बार, please. Just stand up now, please. Vamsi Garu, come on. Vamsi Garu, the biggest PRO of Indian cinema, Telugu cinema, भी तो pan India cinema हो गया, sir. Thank you, sir. Thank you very much. आइए.